Good morning, everyone. So, students, today we will start the new chapter, that is square and square root, your 11th chapter. So, in this chapter, we will discuss the exercise question answers, in which 11th A, in which first question is, by using prime factorization method, check if the numbers are perfect square or not. You have a first question, 1936. Now, the how to check? Make the prime factors of 936. Okay, so it is going on a table of 2, 9, 8, now then 6, then again 8. So again 2 पे जा रहे because it is even number. So 4 2 is 8, 16, 8, then 4, then 2 again, 2, 4, 2, 2 again, 1, 2, 1. Now we know that 121 is going on the table of 11. So 11 is 21. Now this is the answer. Now make the, write down the prime factors. 2 into 2, 2, 2. 4 times 2, then 2 times 11. Now if it makes the proper 2 numbers like this, if it makes up pairs, okay, then it is a perfect square. Suppose this 11 will not come, agar ye na tha, then it is not a perfect square because it is alone, it is not a pair. Understood my point? You have to make a proper pair of a numbers. If it makes proper pair of the numbers, then it is a perfect square number. But suppose 1 2 is missing in this numbers, in these prime factor numbers, then you can say that it is not a perfect square. But now it is a perfect square because it makes a proper pairs. Understood? So thus we can say that 1936 is a perfect square number. Similarly, check the another question 3645. Okay, second part is 3645. Now same method, you have to make the prime factors of this number because it is a odd number. So you can first of all divisibility check with 3. 9, 9 plus 3, 9 plus 4, 13, 13 plus 5, 18. As the sum of the number is going on the table of 3, so it is going on the table of 3 also. So 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 1 is 3, 1 and 5. Now again 3, 4, 4 plus 5, 9. So again 3 पे जा रहा है. So 4, 0 and 5. Okay, 4 0 5 again is going on a table of 3. 3 1 is 3, 10 आ गया. 3 3 is 9 and then 15, then 5 3 is 15. Now again 3 पे. Okay, it is going on a table of 4 3 is 12, 1 45. Again 3 पे. 3 1 is 3, then 5. Now again 3 पे 5 and last में 5 is alone. So you can say that as it doesn't make a pair, proper pairs. ये तो बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गए, ये भी बन गए. But 5 is alone. There is no number. There is no perfect number. There is no perfect square because your 5 is alone. It doesn't. It has no 5 more number. So you can say that it is not a perfect square number. Thus we can say that 3645 is not a perfect square number. Okay. Similarly, you can solve the other parts also. If it makes up proper pairs, then it is a perfect square number. If it doesn't make proper pair, then it is not a perfect square number. Or if it is makes up pairs, then it is a perfect square number.
So solve the other parts by yourself. Okay. So let's discuss the second one. In this question, we have to first of all we have to find the कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बिना सॉल्व करे हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. ओके. और उसके बाद जो है उनके परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बताने हैं कि ये किसका स्क्वायर है. सो एज इट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन शायद लूम वीडियो में भी शायद बताया होगा कि नंबर एंडिंग में 2, 3, 7 और 8 अगर नंबर एंडिंग इससे हो रही है तो वो तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो इनमें से देखो और जो इन नंबरों से एंडिंग नहीं हो रही वो शायद में भी हो सकते हैं, वो हमें चेक करने पड़ेंगे. सो द नंबर एंडिंग विद 5, 1, 6, 6, 4 एंड 1 तो इनमें से कोई भी नहीं है. तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं. तो वी हैव टू चेक कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है. तो याद रखना ना ये जो मैंने अभी लिखा था. सो लेट मी चेक विद ओके फर्स्ट क्वेश्चन. तो दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. अगर है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है. सो सेम मेथड यू हैव टू डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड as you have already done this. So let me check with 5. 5 4s are 20, then 0, then 5 5s are 25, then again 5. So 5 8s are 40, then 81 is there. So it is going on a table of 3, 27, 3 again, 9, 3 again, 3, 3 again, 1. So 1 2 3 प्रॉपर पेयरिंग हो रही है नंबरों की. So it is a perfect square. सो बट हमें फाइंड करने के लिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी तो फाइंड करना ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द पेयर्स. राइट डाउन द पेयर्स. जी. नाउ टू फाइंड कि ये किसका स्क्वायर है इसको एक बार लिख लो. तो आप ये लिख सकते हो कि 5 का स्क्वायर ऐसे लिख लो इसको, या फिर सीधे लिख लो 5 × 3 × 3. इसको एक बार लिखना है, इसको भी एक बार और इसको भी एक बार और इसका स्क्वायर कर दो. अंडरस्टूड. क्योंकि ये दो बार ही है ना तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं. सो नाउ मल्टीप्लाई 5 3s are 15, 15 3s are 45. So you can say that 2025 is the square of 45. Similarly, you will check the other numbers that they are perfect square or not. If the proper pairing is there, then they are perfect square. If not, then they are not perfect square. Now you can okay, and let me do the fifth one part also for you. So do this question also. 1 444. So 2 because it is an even number. So check with 2 7. 2 2s are 4. 2 2s are 4 again 2k because it is an even number. 3 2s are 6. 6 3 yeah, then 2 1s are 2. Now 361 is going on the table of 19. Okay, because 19 into 19 is 361. Okay, so this one. So you can see इसकी भी प्रॉपर पेयरिंग हो रही है. सो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 19 × 2 38 का परफेक्ट स्क्वायर है. Okay, so similarly you can solve the other parts also of these questions. Okay, so students, that this is the third one. In this question है by which number should you multiply the given number. This is one of the first part of the third question. इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें so that it will become a perfect square number. So for that you have to do with the prime factorization method. So it is going on a table of 2. Make the prime factors. First of all, let me do it. 2 2s are 4, then 9. Now 729. Okay, 3 3 2s are 6. Sorry, 3 2s are 6. Then 4, then 3, again 3, 8, 51, then 27, then 9, then 3, and 1. Okay, everyone. Now make the write down the prime factors. 2 into 3 into 3. 1 2 3 4 5 6 6 times.
1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now see, 3 is a proper pairing. Okay, done. But only 1, 2 is left. अगर एक 2 और होता तो it will be a perfect square. So for that our question is इसको किससे multiply करें ताकि it will be a perfect square number. तो you will write कि we will multiply by 2 only 1 and 2. Okay, suppose एक 3 और ना होता, एक 3 की पेयरिंग ना बन रही होती तो you will multiply with the 2 and 3 both, it means 6 के साथ. But now इसकी तो प्रॉपर पेयरिंग ही है, now जो नहीं है बस उसको मल्टीप्लाई कर दो. We will multiply it by 2 to get a perfect square number. Okay, now we will multiply the given question by 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे and find the perfect square number. Okay, find the number whose square is in the result of the new number. Okay, so you will multiply it. 10 plus 1 11, 4 to the 8 plus 1 9, then 2. So its answer is 2916. Okay, then you will write down the answer 2916. Now he said also in each case find a number whose square is the resulting new number. Okay, now ये किसका square है. Now you will write again 29. You will write again prime factors of this. Now no need to do the same this method again. No need to write down the, because we have multiplied these factors with the 2 now. So write down first of all these factors. So हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, और तो बस एक 2 और इसके साथ लिख दो, बाकी सेम रहेगा. 6 टाइम्स था ना एक, so 6 times 3 लिख दो. 1 2 3 4 5 and 6. Now make the pair this 1 2, ये पेयरिंग होगी प्रॉपर. मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से हमारे पास 1 2 की कमी थी which we have multiplied with 2. तो इसके फैक्टर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर सेम ही आएंगे क्योंकि हमने इन्हीं नंबरों को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया. Understood my point? What I am telling to you, trying to say here. Now it is a square of 2, it is a square of 3, it is a square of 3 again, then it is a square of 3 again, and you can write 2 into 3 into 3 into 3 the whole square. So 2916 you can write it as 2, so multiply it 6 3 are 18, 18 3 are 54. So you can say that the new number thus obtained, that is the square of 54. So similarly you can solve the other parts of this question, and if you filled out you can ask me. Now let's move towards the fourth question. So now next question is fourth question. In fourth question we have to tell that कि इसको किससे डिवाइड करें so that it will be a perfect square number. So for that we have to do the find the prime factors. So it is going on the table of 3. So 3 1 is 3, 2 7, then 0 1, 7 8 times. So again 3, 5 3 is 15, 2 आया, 6 3 again 2 आया, 7. So 6 11 plus 7 18. So it is going on the table of 3. 3 1 is 3, 2, then 8 3 is 24, 2 again 27. So 9. So now again it is going on the table of 3, 9 and 3. Again 3 3 3 is 9, 3 1 is 3. As you know that 31 is a prime number. So write down the factors. 5103. So 1 2. Okay.
ओके ठीक है। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको तो पेयरिंग हो रही है, बट एक 3 और एक 31 की पेयरिंग नहीं हो रही। सो व्हाट यू विल डू, यू विल, द क्वेश्चन इज बाय विच नंबर यू विल डिवाइड द गिवन नंबर, इसको किससे डिवाइड करें सो दैट इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो इट मींस यू विल डिवाइड विद एक 3 एक 31, और यू कैन से दैट 3 into 31 is 93. You will simply divide with 93 so that you can get the perfect square. इसको हटा देंगे तो you will get the perfect square number. Understood my point? इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, तो now you will write that we will divide 5103 by 3 into 31, क्योंकि जिसकी पेयरिंग नहीं हो रही उससे डिवाइड कर दो, खत्म। दैट इज 93, so that it will be a perfect square number, so that it will become perfect square number। अब हम उसको डिवाइड करके दिखाएंगे। सो इसको डिवाइड करके कितना आएगा, 5103 के डिवाइड विद 93। तो इसको डिवाइड करके कैसे करोगे, सिंपली मेरा मेथड क्या है, आई एम राइटिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 3 into 3 into 3 into 3 into 31। इसको किसके साथ डिवाइड करना है, 3 एक 31, तो ये कटिंग होगी, ये 3 जा, तो वी हैव लेफ्ट विद ये और ये, तो इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, 9 9 into 9 81, तो इसका आंसर 81 आएगा। डिवाइड करके देख लो, सेम ही आंसर आएगा। सो इट मीन आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 81, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ ये किसका स्क्वायर है, वो भी तो हमने फाइंड करना है। एज यू नो द प्राइम फैक्टर ऑफ 81 इज दिस, सो पेयरिंग होगी 3 का स्क्वायर इनटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 का, सॉरी यस 3 into 3 का होल स्क्वायर, और यू कैन से 9 का स्क्वायर, और यू कैन डू दैट डायरेक्टली बिकॉज़ इट इज अ स्मॉलर नंबर। So you can say that the new number is a square of 9. So similarly you can solve the other parts also. Okay बच्चे? Okay बच्चे, next question, fifth question. The question is find the smallest square number. Square number find करना, वो भी smallest, जो कि इन तीनों के साथ डिवाइड होगा। Understood my point? अगर तो सिंपली क्वेश्चन होता कि find the number which is divisible by this and this, then you can find the LCM. But now you have to find the smallest square number. So for that you have to find the LCM also again. So find the LCM of 8, 9 and 10. Okay. Now 2 पे 4, 5, again 2, 9 and 5, again 2, पहले 2 खत्म कर दो। Okay. Now 3 पे चेक करो, 1, 3 and 5, as they are prime numbers, so 1, 1, 5 and 5, 1, 1 and 1. Now what you have to do, जिसकी तो प्रॉपर पेयरिंग हो या that is okay, but whose pairing is not done, जैसे एक 2 है और एक 5 है, इसकी पेयरिंग नहीं हुई, तो you will, because we have to find the square number, then you will multiply 1, 2 and 1, 5 more to make it a square number. Okay, now you will write down the numbers 2 into write down prime factors. So prime factors are, or you can write LCM directly. LCM कितना आया, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5, तो 3 की पेयरिंग होगी, 2 की पेयरिंग डन, बट एक 2 और एक 5 लेफ्ट। सो टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, we will multiply with एक 2 एक 5, okay, to make it a perfect square number.
So 2 into 2 is already है, एक 2 और आ गया, डन। 5 की पेयरिंग भी होगी, डन, और 3 की भी तो है ये वैल्यू। So now it is a square of 2, it is a square of 2 again, it is a square of 3, and it is a square of 5. Okay, so you can say that the given number 2 into 2 into 3 into 5 का whole square. So now multiply it, 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 5 60. So इसको multiply कर दो, it means the number is 3600. So this is the smallest square number which is divisible by each of the number 8, 9 and 10. So similarly you can solve the 6th question also by yourself. So now next exercise we will do tomorrow. Thank you.